हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप लोगों के बीच में सॉइल साइंस का पार्ट 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था, जो हमारे प्रज्ञा में हम डिस्कस किए थे फर्स्ट क्लास। ये जो हमारा था बेसिक्स ऑफ सॉइल साइंस से रिलेटेड, व्हाट इज़ सॉइल, सॉइल क्या होते हैं, फुल फॉर्म ऑफ सॉइल, फादर ऑफ सॉइल साइंस, और पेडोलॉजी एडाफोलॉजी क्या होते हैं, और यूएसडीए का क्लासिफिकेशन क्या है सॉइल से रिलेटेड। सो दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन और रेडियो एएफओ एग्जामिनेशन, नबार्ड एग्जामिनेशंस या आईसीआर फर्दर इफ यू आर अपियरिंग इन जीआरएफ एसआरएफ या पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो हम लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। कल हमने डिस्कस किया था सॉइल के डेफिनेशन क्या होते हैं। एक बार मैं रिपीट करा दे रहा हूँ। सॉइल क्या होता है? सॉइल इज द अनकंसोलिडेटेड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। या फुल फॉर्म क्या होते हैं सॉइल के? सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ या स्ट्राटम ऑफ इन्फिनाइट लाइफ। दिस डेफिनेशन क्लियर सेट्स that if there is no existence of soil, then we will not be able to grow our any kind of plants. Yeah, ecosystem is not possible. Okay, so in today's lecture, in today's class, we will be discussing about the composition of soil. Composition of soil means what are the elements which are compiled together to form a soil. What are the elements which supports the composition of soil? As we see, as it is written here, the soil is the loose surface material that covers most land. Yeah, it is one of the most important elements of an ecosystem. Has been mentioned here that it is one of the most important elements of an ecosystem. Our ecosystem, if any kind of either we have to cultivate any kind of crops, yeah, for the sustenance of any kind of insect, pest, any birds, this soil is very important for their survival. So it is one of the important element. या दूसरा जिसमें क्या लिखा हुआ है? इट्स कंपोजिशन इज ए मिक्स ऑफ सॉइल इंग्रेडिएंट्स दैट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट मीन्स soil ingredients is the composition that varies from place to place. It is not necessary that the characteristics or the composition of soil is similar in all the aspect of our country. The composition it varies from place to place. सपोज हमारे अगर इफ़ यू टॉक अबाउट उत्तराखंड का जो सॉइल्स होते हैं उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है। यहाँ स्टोनी सॉइल्स हैं या फॉरेस्ट सॉइल्स हैं जनरली। अगर हम लोग अपने साउथ की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, तो उधर ब्लैक सॉइल्स जनरली पाए जाते हैं। या बिहार की बात करें तो वहाँ पे एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। तो इट मीन्स द सॉइल इंग्रेडिएंट्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ओके, एंड नेक्स्ट इसमें क्या है? इट कंटेन्स एयर, वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज प्लांट एंड एनिमल मैटर, बोथ लिविंग एंड डेड. इसमें कहने का मतलब क्या है? जो कंपोजिशन जो होते हैं सॉइल के, इसमें क्या क्या कंटेंट्स रहते हैं? एयर, वाटर एंड मिनरल्स, जो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर प्लांट. ओके, एंड दीज सॉइल कंपोनेंट्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज एंड दे आर फर्दर classified into two categories, and that is biotic factors and abiotic factors. Biotic factors means all the living things and once living things in soil such as plants and insects. Okay, it is very clear. Abiotic factors means which include all non-living things, for example minerals, water and air. These are the very basic things and very important from the examination point of view. In objective type of questions it may be asked that what are the biotic factors of the composition of soil. Okay, so we have to study it very carefully. Next, what is mentioned in this? The composition of abiotic factors is particularly important as it can impact the biotic factors, such as what kind of plants can grow in an ecosystem. Okay, abiotic factor is very important. Okay, such kind of abiotic factors means minerals, water and air. The minerals are the very important. As we know, soil is the basic source of our elements. Phosphorus, nitrogen, these elements are found in our soil. Likewise, carbon, hydrogen, oxygen is found in our atmosphere. So they are the very main important thing, and it impacts the biotic factors for further its growth of our plants. And next one is the most common minerals found in soil that support plant growth are phosphorus, potassium and also nitrogen gas. This point is very important regarding our examination. Maybe the questions can be asked from here that
which are the minerals found in our soil? So our answer will be basically phosphorus, potassium and nitrogen gas. Other less common minerals include calcium, magnesium and sulfur. As we have studied macro, micro and micronutrients. Okay, so these are the macro micronutrients which are basically found in our soil in less concentration, yeah, in high concentration. Next we discuss what is soil texture. Okay, soil texture, as in the definition it is given here, texture indicates the relative content of particles of various sizes such as sand, silt and clay in the soil. What it is given here, it indicates the content of particles. Content of particles means our soil varies in different sizes. Either we talk about sandy soil, clay soil, loamy soil, sandy clay soil, alluvial soil. So these soil vary in their shape, in their content of any kind of proportions, yeah, materials. Okay, so texture influence the ease with which soil can be worked, and the amount of water and air it holds, and the rate at which water can enter and move through soil. Texture, it is very important thing for the growth of our further plants, because in every area the soil texture is different. Somewhere the sandy soil is there, somewhere clay soil is there. So it influences the water holding capacity of our soil, also leaching capacity of our nutrients also. So this soil texture classification is done by USDA, United States Department of Agriculture, and this classification is very important for our examination point of view. The questions are generally asked from this, that what is the USDA particle size classification of clay soil. So that is less than 0.002 millimeter. If we talk about silt, then that is 0.0022 to 0.05 millimeter. If we talk about sandy soil texture, then that is 0.05 to 2 millimeter. Yeah, gravel, that is greater than 2 millimeter. Okay, so this is very important and we have to learn it very carefully. We have to study it very carefully. To find the texture of a soil sample, first separate the fine earth, all particles less than 2 millimeter, from larger particles such as gravel and stones. If we have to check the texture of a soil sample, then first we will separate. We will take our soil sample from 3 to 4 places of our field, and we will separately sieve all the soil materials which is less than 2 millimeter. Okay, fine earth is a mixture of sand, silt and clay, and soils may be assigned to textural classes depending on the proportions of sand, silt and clay size particles. These textural classes are represented in below टेबल. और ये जो टेक्सचुरल क्लासेज का जो क्लासिफिकेशन है ये यूएसडीए के द्वारा है. सो एज वी कैन सी हियर, कॉमन नेम्स ऑफ सॉइल या जनरल टेक्सचर, या हियर द सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, और जो उनका टेक्सचुरल क्लास है किस में वो प्लेस्ड किए गए हैं. लाइक वी सी हियर इन दिस फिगर, सैंडी सॉइल्स कोर्स टेक्सचर मीन्स जो इनके जो सैंड के जो टेक्सचर जो होते हैं, जो इनके टेक्सचर या साइज जो होते हैं, इट्स वेरीज इन 86 to 100. Silt 0 to 14, clay 0 to 10, and they have been kept in the category of sand. या एक इसमें लोमी सैंड भी होते हैं जिनके जो पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं 70 to 86 उस कैटेगरी में आते हैं. 0 to 30 सिल्ट, 0 to 15 क्ले वाले आते हैं. सो एज यू कैन सी हियर इन दिस फिगर अबाउट द टेक्सचुरल क्लासेज ऑफ सॉइल्स. सो आज का जो हमारा क्लास है, आज हम लोग इसको आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इतना हम लोग इसको फिर कल इसको हम लोग रिवाइज करेंगे. सो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे सॉइल टेक्सचर जो क्लासिफिकेशन है सॉइल का, क्ले, सिल्ट, सैंड, इसका क्या साइज होते हैं, क्वेश्चंस वगैरह जनरली पूछे जाते हैं इस चीज़ से. या कंपोजिशन ऑफ सॉइल कंपोजिशन में क्या क्या इकोसिस्टम्स में जो हमारे चीज़ है वो इन्वॉल्व होते हैं इसे कंपोजिशन के लिए. सो फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना वीडियो डिस्कस करते हैं. सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच. फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में.